Okay. So now we studied about nuclear fission last class, right? Fission we studied. Okay. Now we'll study about the chain nuclear reaction. उसी में continuation कर रहे हैं. Fission का only continuation कर रहे हैं थोड़ा. Nuclear reactor तक करने के बाद then we'll go for fusion. Okay. Nuclear chain reaction क्या है? आपको मालूम है? This is chain reaction. क्या होगा? न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा यूरेनियम में and daughter nucleus will form and huge amount of energy is released and these three neutrons are coming. These three neutrons are still again hitting the other atoms of the uranium and again three neutrons are coming here, here, here and daughter nucleus and energy is coming out. This is called uncontrolled chain reaction. वो बढ़ता जाएगा bombless हो जाएगा. That is the thing you have to know. Okay. This is called and this number of neutrons if you see here, how many neutrons here? 1. इधर कितना है? 1, 3 and इधर कितना है? 9. So whether they are in AP or GP, geometric progressions are so they are always in geometric progressions. The neutrons which are coming out is in geometrical progressions. Okay. चलो आता है ना वाला. In milliseconds, thousands of nuclei will be finished if left uncontrolled. हमारे हाथ में नहीं, एक बार हिट करेगा ना वो ऑटोमेटिकली thousands of nucleus energies will be coming and neutrons will be hitting, go on hitting. Okay, then this is in geometric progression. GP में बोलते हैं. Okay. Next. Chain nuclear reaction. Chain nuclear reaction में क्या है? We have two types of chain nuclear reaction: uncontrolled, controlled chain reaction. Uncontrolled में we can't do anything. मतलब अपने आप energy multiply होता जाएगा. Like we studied that 216 megaelectrons per fission or 200 megaelectrons per fission बोल के we studied it. इतना energy is getting released. Okay, every time में. But हमारा nuclear reactor में we have to use controlled chain reaction. Controlled chain reaction में क्या होगा? That देखो only 1 out of 3 neutrons are allowed to cause further fission. 3 neutrons are coming out, right? उसमें से 2 हम लोग छोड़ पकड़ रहे हैं. Okay, we are making some material we are using to absorb the neutrons, and only 1 neutron will be hitting to other atoms. Again 3 neutrons will be coming, again 2 को absorb करेगा, 1 will be there. So it is controlled. इसको controlled बोलते हैं. Here atom bomb use होगा. वो वाला one fission causes one fission in the next generation. Only one fission ही होता है always. It will not come 3-3. Okay. For nuclear reactor, we are using controlled generation. Atom bomb will use this 50 kg of uranium. All right, last months. Then now ये chain reaction होने के लिए some difficulties are there. ऐसा नहीं कि normally just hit करो, ऐसा नहीं है. थोड़ा difficulties are there. That difficulties also we'll see. In nuclear reactor में we'll use this. Okay. Okay. Difficulties in chain reaction में poor concentration of fuel.
ये दिस इज एक्टिंग लाइक फ्यूल, राइट? यूरेनियम इज एक्टिंग लाइक ए फ्यूल. ओके, पूर कॉन्सेंट्रेशन जनरली आपको यूरेनियम 92 235 and uranium, one more is there, 92 238. Okay, now इसमें से which one will be using like a fuel? Uranium 235 we are using as a fuel, right? This one we are actually is कितना percentage मालूम है? 0.7% only available on the crust. Okay, and this one is 99.3% available. But this is not useful for fission के लिए. Okay, why we'll see. But we are using this only. इसके लिए यही useful होगा. But less further. That's a poor concentration of fuel. Poor concentration of fuel. Then why we are not using this one? This uranium 238. Why we are not using? ये बहुत है ना useful कर सकते हैं ना लेके. Doubt आएगा ना? तो देखो uranium 238 न्यूट्रॉन हिट करेगा, राइट? हिट करेगा. इसके लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड. हम लोग नॉर्मली क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन, वेरी लो एनर्जी 0.025 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. बट इसमें नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ए फिशन. ठीक है सर, हम लोग कुछ तो करके आई विल इंक्रीज द न्यूट्रॉन का स्पीड एंड आई विल मेक टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एक बार हिट करने के बाद आएगा ना बोल के आपको डाउट आएगा. ठीक है, नाउ ये न्यूट्रॉन क्या होगा, ये हिट करने के बाद 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग आउट. ओके, एंड इज दिस न्यूट्रॉन्स का एनर्जी देखिएगा तो इट इज लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अगेन स्टॉप हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा. दिस एनर्जी इज लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, सो एक बार किधर से भी करके कुछ तो करके एक बार 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेके आने के बाद आल्सो 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग आउट, एनर्जी इज गेटिंग रिलीज. बट दैट न्यूट्रॉन को मतलब अगेन द स्पीड कम हो जाएगा, लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. फर्दर फिजन विल स्टॉप. So there is a problem. In uranium 235 only this is happening. That's why poor concentration of fuel. That's why we are seeing other planets may available or not available. We are seeing. अभी 235 में भी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? सी no, second, need of slow neutron in uranium 235. देखो uranium 235 also there is a problem. Uranium 235. Here neutron is there. एक थर्मल न्यूट्रॉन है, इसका एनर्जी है टोटल क्या आएगा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इतना एनर्जी है. इसको थर्मल न्यूट्रॉन, राइट? थर्मल न्यूट्रॉन. ओके, नाउ क्या होगा, ये न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा. वी आर गेटिंग 3 न्यूट्रॉन्स, राइट? वी गॉट 3 न्यूट्रॉन. कौन सा? नॉर्मल वाला यूरेनियम हम लोग जो यूज कर लेते हैं. ओके, 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग. ये न्यूट्रॉन्स का एनर्जी इज सो ह्यूज, अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी इज कमिंग. देखो उसमें तो कम है, इसमें ज्यादा है. नाउ क्या होगा, this 2 mega electron volts energy, if it hit the other atoms, it will cross and it will come back. No further fission will take place. ऐसे जाके चल जाएगा. आपको बिफोर डूइंग फिशन इसको स्लो करना पड़ेगा. इसको स्लो करके अप टू जिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेके आने के बाद देन फर्दर फिशन विल हैपन. ओके, दैट मच. मतलब सी वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स के बारे में. एक यूरेनियम इतना सॉलिड ब्लॉक है. ओके, अगर मैं एटम इनसाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, एटम का एक एटम के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, so these neutrons which are coming, उसका एनर्जी इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड ये थर्मल एनर्जी नहीं है. आपको क्या करने का, वी हैव टू स्लो डाउन एंड स्लो डाउन कैन बी डन थ्रू मॉडरेटर. इन न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर्स विल यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स. स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन approximately 0.025 mega electron volts to
इलेक्ट्रॉन्स टू 1 इलेक्ट्रॉन्स, इतना एनर्जी बनाने के लिए मॉडरेटर्स विल यूज टू reduce. So एक एक स्टेप में they will reduce the speed and then further fission will take place. Okay, how to reduce the speed nuclear reactors में देखने वाला है. So इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसा है कि एक बार हिट करेगा पूरा आ जाएगा बोल के, ऐसा नहीं. Done. Next. But if you're increasing the speed of the, I mean, if you're increasing the energy of neutrons, wouldn't the speed increase? Energy of the neutrons. Yes, you're increasing it. Slow down the speed of the neutron. मतलब एनर्जी कम हो जाएगी. एनर्जी मींस दैट काइनेटिक एनर्जी ओनली. काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा बाय यूजिंग मॉडरेटर. स्पीड कम हो जाएगा. Okay. Yes. So, but you've written 0.025 to 1 electron volt. इसका एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट. मतलब उतना स्पीड रिड्यूस करके इनडायरेक्टली एनर्जी को भी रिड्यूस कर रहा है. Okay. See, half mv square, right? Energy. So if velocity is decreasing, means kinetic energy will decrease, right? So क्या है kinetic energy? talking about energy means nothing but kinetic energy का बात कर रहे हैं. Okay. Okay. Now ऐसा reduce हुआ. Now next one is critical mass of the fuel. See, generally bike में when you are going, you will know that petrol खत्म हो रहा है बोल के petrol करेगा. But इसमें nuclear reactors में we have to know that uranium खत्म हो रहा है, हो जा रहा है. मिनिमम रहेगा ना, इतना मिनिमम तक रहेगा. वो बाद में बंद करके फिर से they will remove that one. Again they will introduce they'll put the new fuel, new uranium. Again they will start a reaction. Okay. This is the critical mass of the fuel. The low energy thermal neutron still moves with 8 times the speed of the sound. ये एनर्जी का इसका करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या होगा, वो 8 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड तक उतना स्पीड, कम स्पीड वाला नहीं है वाला. ओके, एनर्जी वाला कम स्पीड वाला नहीं है. ओके, 8 टाइम्स बन जाएगा. एट सच हाई स्पीड दीस न्यूट्रॉन्स में पास इजीली थ्रू थिन लेयर्स ऑफ फ्यूल. एक थिन लेयर ऑफ यूरेनियम फ्यूल लगाने से वो पास हो जाएगा, उसमें फर्दर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. इवन दिस स्पीड आल्सो, थर्मल न्यूट्रॉन स्पीड आल्सो, थर्मल न्यूट्रॉन एनर्जी के. ओके, so we need some minimum thickness of the fuel which can be trap the neutron and cause fission. Minimum thickness है ना, वो thickness को the limiting mass of the fuel which can trap neutron and maintain chain reaction is called critical mass. They'll calculate इतना तक layer आने के बाद they'll stop the thing and further again they'll put the other fuel and they'll start doing the reaction. And that is called critical mass. Like हमारा पेट्रोल में खत्म हो रहा है बोलते इंडिकेटर दिखेगा ना, उधर तक करेगा, बाद में क्या करेगा, पेट्रोल पंप पे जाके फिल करेगा. I said they'll stop and they'll put the other uranium. Okay, chalo. Now last one is controlling the rate of fission, K factor. K factor बोल के rate of fission. K क्या है? Number of fission in present generation by number of fission in previous generation. अभी present generation में कितना आ रहा है and previous में कितना आ रहा है, fission कितना reaction हो रहा है. Based on that we can tell energy is increasing or decreasing. Suppose मान लो if K is equal to 1, one fission cause one fission.
मतलब एक फिजन इधर हो रहा है, आगे भी फिजन हो रहा है बोल के। सो द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, दिस ओनली वी वांट, रेट ऑफ एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, फिजन हो रहा है, इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, के वैल्यू चेक करना पड़ेगा। के वैल्यू ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो मतलब इट विल बिकम लाइक एटम बॉम्ब, जल्दी जल्दी कुछ बंद करके कुछ करके करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा ब्लास्ट भी हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ तो बहुत उस एरिया गया काम से, ऐसा रहेगा। ओके, एंड के इज ग्रेटर देन 1, वन फिजन कॉजेज मोर देन वन फिजन, तो क्या होगा, एनर्जी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, एटम बॉम्ब बन जाएगा। के इज ग्रेटर देन 1 है तो, एंड लेस देन 1 है तो रेट ऑफ फिजन डिक्रीजेस, मतलब खत्म होने वाला है, बाद में डिक्रीज डिक्रीज करके जीरो हो जाएगा रेट ऑफ फिजन। तो ऑलवेज कंट्रोल करके वी हैव ए कंट्रोल रॉड्स, ओके, वी हैव ए कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वो क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, वेयर रिक्वायर्ड न्यूट्रॉन का। सपोज के इज ग्रेटर देन 1, क्या हो रहा है, फिजन इंक्रीज होता जा रहा है, एनर्जी गेटिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेगा। न्यूट्रॉन्स ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, दिस न्यूट्रॉन विल नॉट हिट द अदर यूरेनियम एंड दैट विल स्टॉप। सो एनर्जी शुड बी कांस्टेंट ऑलवेज, राइट। एग्जाम शेड्यूल हुआ है, आप मॉडर्न फिजिक्स का लिख लो आज। 3 chapters only. तुझे का फॉर्मूलास आई गोइंग टू आस्क, कंप्लीट 12 प्लस का तुझे पूरा वही करने वाला है पूरा। एंड साढ़े 1 पेपर 1-2 पेपर्स करेंगे, देन बीच में सेमीकंडक्टर सर्किट, या वो भूल जाओ अभी पूरा, वी डोंट वेस्ट टाइम पर दो एक चैप्टर वो बाद में माइंड से निकालो, पहले पेपर्स भी करेंगे, बीच बीच में विल मेक यू डू सेमीकंडक्टर्स में नोट्स नहीं मिलेगा, आई विल गिव द मटेरियल और समथिंग, बट एक्चुअली टेक्स्ट बुक इज देयर फॉर यू, सेमीकंडक्टर्स में लाइक एनसीईआरटी और योर स्कूल टेक्स्ट बुक विल बी देयर, राइट, नॉर्मल मटेरियल। ओके, उसमें सेमीकंडक्टर्स में पूरा theoretical है, so no need of writing, I will generally explain semiconductor. Digital circuits also will be easy, so easy digital circuits, OR gate, AND gate वाला वो डील करेंगे, बट रिमेनिंग स्टार्टिंग पार्ट इज थियरिटिकल है, जस्ट एक बार ओवरऑल व्यू एक्सप्लेन करूंगा, हो जाएगा। ओके, 2th क्लास में हो जाएगा। कमेंट, चलो नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर, आई टोल्ड राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो कैसा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है, क्या होगा, एनर्जी विल बी कमिंग, आई टोल्ड राइट, एनर्जी बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी वी विल हीट द वाटर, स्टीम करना पड़ेगा, एंड टर्बाइन जनरेटर विल गेट आउटपुट, दैट्स द थिंग। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर, ये वाला न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, इधर शील्डिंग है, सो दैट आपको न्यूक्लियर रिएक्शन शुड नॉट कम आउटसाइड, शील्ड किया है पूरा। And this black color nothing but fuel rods, uranium rods है, uranium कौन सा fuel, कौन सा uranium 235 uranium fuel rods है, uranium देखो I put some layer लगा है fuel, okay, and ये control rods है, I told right, अगर मैं कुछ भी न्यूट्रॉन्स ज्यादा आ रहे तो ये कंट्रोल रॉड को डिप करूंगा, नीचे करने से ऑब्जर्व करेगा, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेगा। ओके, सो आई कैन मूव अप एंड डाउन। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इधर से एक न्यूट्रॉन को हिट करूंगा इस मेटल में। ओके, सो क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड 3 न्यूट्रॉन्स विल बी कमिंग आउट। सो दे विल चेक द के फैक्टर चेक करेगा, के फैक्टर अगर बढ़ता गलत जा रहे तो यू विल पुट द डाउन करेगा, डाउन करके ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रॉन्स को। ओके, एंड ये मॉडरेटर है, ये पिंक वाला क्या है, मॉडरेटर जनरली विल यूज बस वाटर और हॉट वाटर यूज करने वाला। ओके, D2O बोलते हैं। ओके, ये पानी यूज करने वाला, पानी यूज करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का स्पीड कम हो जाएगा। आई टोल्ड राइट, आपको इधर इसका जो भी न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, द न्यूट्रॉन्स हैज सो मच ऑफ एनर्जी, राइट, सो मच ऑफ एनर्जी, उसको रिड्यूस करने के लिए
पानी यूज करेगा अपने आप, तो ये स्पीड पानी में जाने से थोड़ा धीरे हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द थर्मल न्यूट्रॉन। ओके, दैट न्यूट्रॉन जाके फिर से अदर फ्यूल को हिट करेगा, हिट करके ऐसा फिजन होता जाएगा एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। ओके, नाउ क्या होगा इसमें, ये पूरा ऊपर में देयर इज अ कूलेंट, एक कूलेंट, एक कूलेंट क्या करेगा टेल में, एक कूलेंट ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पूरा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड ये सर्कुलेट करेगा, इधर से ऐसा सर्कुलेट करेगा पंप से, वो कूलेंट है। ओके, गर्म वाला है ना, गर्म है। नाउ क्या होगा, इधर वाटर इज देयर, वो कूलेंट से क्या, गर्म कूलेंट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पानी, पानी एब्जॉर्ब करके इतना हीट है ये, इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। ओके, नाउ दैट स्टीम आई एम पासिंग थ्रू द जनरेटर, टरबाइन एंड जनरेटर, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमारा जनरेटर में काम क्या है, रोटेट करने का, रोटेट कैसे भी करो, ऐसा आइदर यू कैन डू साइक्लिंग एंड रोटेट, और हाथ से रोटेट करो, और पानी से स्टीम से रोटेट करो, वी वांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा। ओके, so this is what happening in the nuclear reactor, it is like conceptual purpose they are using, and क्या होगा, ये steam जो भी आएगा, again I will pass in cold water, it will convert into again water हो जाएगा, again water जाएगा, steam जाएगा, फिर से करना, मतलब वो बार बार पानी हो गया, पानी हो गया बकेट से फिर से डालने से नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना बड़ा, मतलब प्लांट इतना, डायग्राम तो स्मॉल है बट ये नियर सम एकर्स में रहेगा, सम एकर्स, सो मेनी एकर्स में इतना बड़ा बड़ा प्लांट्स रहेगा। ओके, तो दिस इज द वन न्यूक्लियर रिएक्टर का, एंड इसका पार्ट्स का एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन थ्रू वन लाइन में। देखो, फ्यूल रॉड्स contain fissionable materials such as uranium 235 or plutonium 239. These undergo nuclear fission to release heat and neutrons. Next, moderator क्या करेगा, slows down fast neutrons so that they can cause further fission. Graphite or heavy water they will use, D2O बोलते हैं। देखते जाओ, न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट्स है, ये पूरा theoretical है, there is no thing. Sometimes SLC इंजीनियरिंग में पूछा तो डैश कंट्रोल्स द के फैक्टर बोल के बोलेगा, डैश कंट्रोल्स द के फैक्टर, कौन सा मॉडरेटर है कंट्रोल रॉड्स, व्हिच वन विल कंट्रोल द के फैक्टर, मतलब के इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, एनर्जी गेटिंग एनर्जी मल्टीप्लाइड हो रहा है, उसमें कंट्रोल रॉड्स को नीचे करने का, सो दैट कंट्रोल रॉड इज मेड ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहेगा, सो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, सो के फैक्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल रॉड्स ऐसा। Okay. Next, control rods made up of cadmium or boron, they absorb excess neutrons to control the rate of fission. And coolant क्या करेगा, transfers heat produced to the reactor to the heat exchanger, like coolants कौन सा, water, carbon dioxide, sodium, heavy water they'll use. And heat exchanger क्या करेगा, uses reactor heat to convert water into steam without mixing radioactive materials. And then we'll go for the generator pass होगा, pass confirm लिखो line.
एक्सरे का भी प्रिंट आउट ले लिया, एक्सरे एंड फाइल बनाया, कुछ पेपर्स इधर उधर फेंक रहा है ऐसे। फिर हम आपको क्या है, प्रिंट आउट नहीं लिया अभी तक? Sir, I have it. ओके, आपको एक जगह में रखो, बिकॉज पेपर्स लिखने वाले कैन सम स्टार्टिंग में यू कैन टेक एज अ फॉर्मल शीट हेल्प आल्सो, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग पेपर्स में टू टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मल शीट एंड ट्राई टू डू। तो 2-3 पेपर्स करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, देन स्लोली स्लोली एडजस्ट द फॉर्मल शीट हेल्प आप माइंड में यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म लिख लो, पूरा मत लिखो, शॉर्ट फॉर्म लिखो। Common coolants they'll use, and heat exchanges, it converts from water to steam. Turbine in the center, the steam spins the turbine which runs the center to produce electricity. And shielding tube, thin concrete and lead walls are absorb the radiation product from workers. Because both then who was working in nuclear plants, they'll get cancers, many cancers will get. That's why they'll use so much shielding laga ke jayega inside the nuclear reactor. Because radioactive substances are so, अभी normal medical shop, medical में when you go X-ray or कुछ सीटी स्कैन करने समय they'll give one big jacket to you, wear बोल के। Why? Because this radioactive substance only making us to make some cancer आने के chances ज़्यादा रहेगा। That's why, but they are working totally in the radioactive substance only, so much dangerous। And condenser क्या करे, converts steams back to the water with using cold water, so it can be reused। Again reuse करने के लिए एक condenser use करेगा। This is a condenser where water is converted again back, cold water convert करने के लिए, गर्म water to cold water। लास्ट विल बी द न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा। फ्यूजन में कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट उसमें आपको अल्फा बीटा वाला है, आपको कौन सा आई गिवन इन फॉर्मूला शीट 13th वन 14th वन आपको दोनों लर्न करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा इमिशन, बीटा माइनस डीके बोल के, दे हैव टू टाइप्स ऑफ डीकेस। बीटा माइनस डीके नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ओनली, उसका चार्ज इज -1 0, एंड बीटा प्लस डीके इज नथिंग बट पॉजिट्रॉन बोलते हैं, +1 0, चार्ज इज +1 0। So many questions are there. If you do nuclear का PYQs, as a question equation आएगा। Done? चलो, न्यूक्लियर फ्यूजन, लास्ट टॉपिक। फ्यूजन, फ्यूजन क्या है आपको नॉर्मल एक्सप्लेन। फ्यूजन क्या है आपको, टू स्मॉल हाइड्रोजन न्यूक्लियस को नजदीक में लेके आने का, फ्यूजन करने का, दोनों ऐड करने का, राइट। सो फ्यूजन आने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हाथ से पकड़ के लेके आओ तो फ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो इसमें बिकॉज दिस न्यूक्लियर फोर्स विल नॉर्मली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज विल रिपल, राइट। So electrostatic force का against we have to bring, and we have to bring the thing. Once combine हो गया तो nuclear force coming to picture, it will catch, पकड़ के रखेगा। At that time also when combining also, so much of huge amount of energy is getting released. Okay, that energy we can use for the purpose like generation, देखेंगे बोल के they are trying, but actually क्या होगा, Earth में it is not possible only because वो दोनों न्यूक्लियर को आपको नजदीक लेके आने के लिए एक्चुअली बहुत गर्म कराना पड़ेगा, बहुत गर्म करने का, कितना 10⁻⁹
केल्विन तक हीट करना पड़ेगा. देन क्या होगा, when I go on heating, this nuclear will go like this movement, and this also nuclear will go like this. and नजदीक में आने के बाद certain time तक वेट भी करना पड़ेगा. then only to start fusing. एक बार फ्यूज होगा ना, ये फुल स्टार्ट हो जाएगा पूरा, मतलब एनर्जी देता जाएगा. लाइक अर्थ में इट इज नॉट पॉसिबल 10⁹ बोल के, पर फ्यूजन किधर हो रहा है, सन में हो रहा है. सन में क्या होगा, न्यूक्लियर कोर ऑफ द सन में बहुत गर्म है. सो क्या होगा, वो न्यूक्लियस हीलियम गैस इज प्रेजेंट एक्चुअली देयर. हीलियम गैस कैसे बना हीलियम, दैट इक्वेशन आल्सो विल सी. हीलियम गैस बनने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दोनों कंबाइन करेगा, बहुत गर्म से मूवमेंट होके थोड़ी देर तक फ्यूज होगा. वंस फ्यूज होने के बाद स्टार्ट हुआ, पूरा बर्निंग स्टार्ट हुआ. दैट्स व्हाई सन स्टार्ट बर्निंग. अप टू कितना साल तक बर्न होगा, जनरली अप टू हीलियम गैस खत्म होने तक बर्न होगा. they told approximately 10 बिलियन ईयर्स तक रहेगा वो सन का. आपको 5 बिलियन ईयर्स हो गया अभी, सो 5 बिलियन ईयर्स बचा है. उसका हीलियम गैस खत्म हो गया तो खत्म पूरा. दैट्स व्हाई व्हेन यू स्टडी द स्टार्स का, एवरी स्टार आल्सो हैव्स अ लाइफ स्पैन. दुनिया में किसी को भी सन भी मरना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. ओके, सो वो ड्रेन पे आपके रेड जेंट कुछ बन के व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा. ऐसा बन जाएगा, कुछ नहीं, सन है, देयर इज नो हीट, नथिंग आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स के बाद. हमारा तो सेफ है, हम लोग बहुत साल करने के बाद 5 बिलियन ईयर्स को तो देखो कितना साल लगेगा. वो हीलियम गैस के वजह से ओनली इज बर्निंग. Okay, so this all nuclear fusion is taking place only in the sun. Earth may not possible. Okay, the process in which 2 or more lighter nuclei combine to form heavy nucleus, releasing large amount of energy, is called as fusion. Explanation में देखो, when 2 lighter nucleus of hydrogen isotopes are taken, देखो 2 hydrogen isotopes are taking, deuterium and tritium, come very close together each other. The strong nuclear force binds them together to form a new or heavy nucleus. दोनों नजदीक आके a heavy nucleus बनेगा. Since both nuclei are positive charge, they repel each other due to Coulomb repulsion. Because positive will repel, right? उसके वजह से there is a difficulty. To overcome this repulsion, a very high temperature, 10⁷ to 10⁹ Kelvin तक, at high pressure में we have to put that's why this fusion is called thermonuclear reaction बोलते हैं. Okay, thermal means heat. So दोनों बहुत हीट कर रहे हैं, इतना 10⁷ केल्विन तक देना पड़ेगा to combine both deuterium और tritium combine करने के लिए. Okay, once combined, खत्म, again it will start giving the energy. Okay, and we'll use in example, I tell you, hydrogen bombs we can prepare by this nuclear fusion. Hydrogen bombs, but hydrogen bomb में मतलब 2 hydrogens will be there, nucleus will be there. वो चालू होने के लिए नॉर्मली हम लोग दिवाली बम कैसा लगेगा, आग देना, स्मॉल फायर, राइट? ऐसे इसको हीट करने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए, बॉम्ब फटने के लिए, वी हैव टू थ्रो एटम बॉम्ब इनसाइड इट, हाइड्रोजन बॉम्ब. दैट एटम बॉम्ब उसके वजह से 10⁷ तक आएगा, देन इट विल स्टार्ट फ्यूजिंग एंड देन मे बी इट विल स्टार्ट. बट नॉट पॉसिबल, एटम बॉम्ब डालने से ओनली पूरा देश पूरा उड़ गया, ऐसा रहेगा. उतना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना.
तो हीलियम भी कैसा फॉर्म ऑफ सन में वो इक्वेशन रहेगा, जस्ट लिख लो उसका इक्वेशन हो जाएगा. ओके, यस, टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. ओके, एग्जांपल देखो, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम देखो 3 and 2 वाला कंबाइन हुआ था, हीलियम बन रहा है. हीलियम टाइम में न्यूट्रॉन आल्सो विल गेटिंग रिलीज्ड एंड 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड. कभी भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुआ तो two hydrogens of H2 form hydrogen and helium and neutron and release of 17.6 megaelectron volts per reaction. Like energy source. The energy released in the fusion comes from the mass defect. एक energy क्यों आ रहा है? Because of mass defect. Same कहानी again. Mass defect की वजह से energy is getting released, and from this relation we can find the even energy and mass defect also. Okay, delta m E equal to delta m c square. Same. भाई energy किधर से आ रहा है? Because of mass defect. Your mass is getting disappear. Some of the mass is getting disappear. Okay. कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको when you do PYQs में, you'll understand कैसा लिंक करेगा, क्या करेगा. नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. एसर्शन रीजनिंग्स में ऐसा पूछेगा, स्मॉल थिंग्स विल बी आस्किंग. आपको कौन सा किधर डाउट आएगा, रीजन इज सैटिस्फाइंग एसर्शन नॉट एसर्शन, दैट वन यू विल अंडरस्टैंड. एसर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू रहेगा, whether reason is telling the answer or not, a doubt only doubt है. Next Sunday you're writing the JEE Mains का actual paper only you're writing, right? देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है. तो ब्रो इनिशियली कम आए तो भी डोंट वरी, आप करते जाओ एंड लर्न करो. द पेपर कंप्लीट पेपर यू हैव टू लर्न. व्हेन वन पेपर डन, ऐसा नहीं कि मत छोड़ो, यू पुट द आंसर शीट आल्सो, उसमें डिटेल में देखो, डाउट है तो भी देखेंगे, उसमें फार्मूला अपडेट करो. जो फार्मूला शीट आपके पास बाजू में है तो देन एंड देयर इज वी कैन अपडेट. ओके ये आ रहा है बोल के. तो होने के बाद alternate days we will plan. Alternate days I go on putting that paper. So one paper लिखता जाओ, then send me the answers. I'll correct and I'll send. Start from देखो क्या हो गया. देखो कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन कंडीशन क्या चाहिए, 10 power of 7 केल्विन चाहिए, एंड हाई प्रेशर हाई डेंसिटी टू ब्रिंग द न्यूक्लियर क्लोजर, एंड कन्फाइनमेंट टाइम इज न्यूक्लियर मस्ट रिमेन टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर फ्यूजन. ऐसा नहीं कि एक बार टच किया, ऐसा नहीं है, सो मच टाइम रुकना पड़ेगा. दैट्स द प्रॉब्लम अगेन. ओके, देन ओनली द फ्यूजन विल स्टार्ट. एप्लीकेशन वेयर यूज हाइड्रोजन बॉम्ब में, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में विल यूज दिस फ्यूजन रिएक्शन. सेकेंड ईयर इज इजी, राइट? सेकेंड ईयर इज इजी देन फर्स्ट ईयर, राइट? सेकेंड ईयर तो बहुत इजी है. मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एसी, रे ऑप्टिक्स, दिस आर ऑल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको इसमें ज्यादा फॉर्मुलास नहीं है, कम है फॉर्मुलास. करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आपको इक्वेशंस केवीएल केसीएल आए तो इन्हीं क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. इन्हीं करंट पॉइंट का बोल तो केवीएल केसीएल यूज करके कर सकते हैं. थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स, बोर लगेगा, अरे क्या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. थोड़ा पेशेंस रखो, गो ऑन डूइंग द क्वेश्चंस. नियरली आपको नवंबर दिसंबर जनवरी, दिसंबर डेट्स पक्का नहीं मालूम है ना?
जनवरी में कब है बोल के नहीं मालूम एग्जैक्ट डेट नहीं आया ना, लाइक मे बी 15 जनरली कभी भी एंडिंग में ही रहेगा, 20 से स्टार्ट होगा, 20 ऐसा रहेगा, स्टार्ट होगा कंटिन्यूस 1 वीक तक रहेगा। सो 15 तक मान लो, जनवरी 15 तक, सो दिसंबर नवंबर 15, सो विल स्टार्ट पेपर्स एक्सपेक्ट, इसमें नियरली 45 days है। सो मिनिमम आवर टारगेट इज 30 पेपर्स, 30 पेपर्स करना है, 13 to each पेपर में 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 70 क्वेश्चंस। फॉर्मुला आपको पक्का लर्न करके 70 क्वेश्चंस करके, या और कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं परफेक्टली, ओके। बट इंटेंशन क्या है, पेपर करने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट गेस, डोंट गेस एनीथिंग, नेगेटिव मार्क्स आएगा ना, नहीं डोंट गेस एनीथिंग, आपको जो भी परफेक्ट आते हैं करो, लिखो, आने के बाद देन वो नेक्स्ट पेपर दूंगा ना, सॉल्यूशन पेपर दूंगा ना, जो मिस्टेक्स वाला सिंसियरली विदाउट विद मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड करके लिखो, करो पूरा, करने के बाद फॉर्मुला अपडेट करो, दैट्स इट, डन, वन पेपर डन, गो फॉर नेक्स्ट पेपर। ऐसा किया तो मजा आएगा, एडअप होता जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके। चल, न्यूक्लियर फिशन अर्थ में क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट, देखो सो सच टाइप हाई टेंपरेचर इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑन द अर्थ, ये तो मालूम है, नो नीड ऑफ राइटिंग। देखो न्यूक्लियर फिशन, सन में आपको प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन है, ये जस्ट इक्वेशन है, मतलब हीलियम कैसे बना, हीलियम कैसा आया बोल के चेन रिएक्शंस आर देयर, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सडनली हो गया ऐसा, हीलियम गैस आ रहा है बोल के, ऐसा नहीं है, ओके। हाइड्रोजन गैस से हीलियम कैसा आया देखो, स्टेप बाय स्टेप जस्ट राइट द इक्वेशन, दैट्स इट, ये इक्वेशन लिखो फर्स्ट स्टेप में। हाइड्रोजन एटम दोनों कंबाइन होगा, फ्यूज होके ड्यूटेरियम बना, ड्यूटेरियम बनने के बाद a positron is coming out, a E plus is nothing but positron, okay, and this is we call as neutrino is released, neutrino particles, actually radioactive substance का आपको ये particles के बारे में है, but they removed radioactive substance, okay, so neutrino बोलते हैं, neutrino, and positron is positron, दोनों release होगा, and energy is coming out. Now ये positron and बाजू में जो भी इलेक्ट्रॉन है कंबाइन करके to gamma, which is gamma photons बोलते हैं, and this much energy is coming out, मतलब एक बार एक फिशन करके हीलियम गैस बनने के बाद कितना एनर्जी वी आर सीइंग फॉर वन एटम का वी आर सीइंग, नॉट लाइक सो मेनी एटम्स का, एक एटम का वी आर सीइंग। तो पहले उधर सन में 2 हाइड्रोजन था, कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बना, एंड दिस वन राइट डाउन, दिस वन लाइक 4 स्टेप्स रहेगा, 4 स्टेप्स में कंबाइन होकर हीलियम गैस बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, now deuterium बनेगा, deuterium again it will react with protium to form, देखो helium 2-4-2-3 बना, and gamma is coming and this much energy is coming out, 5.49 megal, just write the equation, that's it। and क्या होगा, now this helium वाला H3 वाला 2-3 is there, again reacts with another 2-3 to form helium, 2 hydrogen isotopes, देखो 2 isotopes again 2 hydrogen आया ना, again it will combine, again same first step continue होगा, okay, and देखो 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इक्वेशन लिखो, मतलब इनडायरेक्टली देखो हीलियम बन गया, हीलियम कैसा बन रहा है इज एक्सप्लेनिंग, हीलियम गैस कैसा आया बोल के डाउट आएगा पीपल को, सन में हीलियम गैस आ रहा है, हीलियम गैस की वजह से सो मच ऑफ एनर्जी कमिंग आउट, हीलियम कैसा है, कौन लगाया बोल तो स्टार्टिंग हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ, फ्यूजन से हीलियम बना, 3 स्टेप्स में बना, एंड इट ऐसा नहीं कि 1 day 2 days नहीं है, इट विल टेक सम इयर्स टू कन्वर्ट टू दिस हीलियम, जस्ट राइट द इक्वेशन, तो ये इक्वेशंस को पूरा ऐड करके, पूरा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से पूरा ऐड करके टोटल एनर्जी विल बी रिलीज्ड। Sir, you're muted. now net reaction क्या होगा, कंबाइन करके ऑल स्टेप्स करके विल गेट द फाइनल इक्वेशन, 4 हाइड्रोजन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम गैस बन गया ना, and 2 neutrino plus 6 gamma and 26.7 mega electron volts of energy is getting released,
for one fission. एंड दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किस में आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन में आ रहा है. न्यूक्लियर फ्यूजन इज द मोस्ट एनर्जी वन. ओके, so always per unit mass से we are saying per unit mass से फ्यूजन में if you calculate per unit mass कितना होगा? टेल में कितना एनर्जी आएगा per unit mass in one nucleus of uranium 235 फ्यूजन में भी डन राइट. कितना एनर्जी रिलीज किया? कितना एनर्जी फ्यूजन में रिलीज किया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. we done right, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. I want per unit mass 235 में इतना एनर्जी राइट. 1 AMU में कितना एनर्जी रिलीज की? टेल में 1 AMU में. ठीक, 235 AMU में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहे हैं. 1 AMU में कितना आएगा? 200 by 235 right? Approximately per unit mass we calculating 0.85 mega electron volts energy is coming out per unit mass in fission. This is fission. पर यूनिट मास चेक किया तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ मच एनर्जी किस में ज्यादा है बोल के. सिमिलरली नाउ क्या होगा? 4 हाइड्रोजन्स गिविंग हाउ मच एनर्जी? 26.5. मतलब 4 AMU ऑफ एनर्जी इज वी आर गेटिंग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है. पर 1 AMU if you calculate 26.57 divided by 4, if you divide you'll get as 6.67 AMU. देखो ये कितना 0.85 आ रहा है पर यूनिट मास में 6.67 AMU आ रहा है. मतलब इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स राइट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो इतना एनर्जी इज कमिंग आउट पर यूनिट मास में. सो दिस इज फ्यूजन. सो फ्यूजन एनर्जी इज मोर देन द fission. So by this your chapter successfully done.